In this video, I am giving information on the Rogi Pariksa or examination of the patients in brief on detail following the eightfold examination method in Ayurveda or Astasthana Pariksha and giving detailed information on the Nadi-pariksa or a pulse examination technique. Before um, giving information on the Nadi-pariksa, first I will brief in what are the brief examination of the patients, proceed, completes, how the process completes in the stepwise. The first is the Darsana or a visual observation of the patient. Second is the spars or the third touch in Ayurveda. And um, third is the parsna or interrogation. So there are three brief examination methods for examining the patients: Darsana, Sparsana, and Parsana. And for details, the eightfold methods, including Nadi Pariksa or a pulse exam, what is I am covering in detail. But others are, besides Nadi Pariksa, other are Mutra Pariksa or a urine examination, Mal Pariksa, the examination of the eyes on the basis, the person suffering from the Vayu disease will dry and smoky type of the eyes and will complain the burning eyes and similarly the yellowish tinge in the white of tinge in the white of the eyes in the or aversion of the light burning sensation indicate the pitta type of the disease and dull type of eyes in the kapha predominance. Before giving information, you first understand the Tiradosa concept. Tiradosa concept, the dosa has three states. The aggravations, diminution, and equilibrium. And according to the Ayurveda, the human body is composed of the three fundamental elements or a categories called the dosas, dhatu, and malas. And there is need equal balance in them. But if any dosa, dosa, first understand the dosa are composed of the five mahabhutas, means Prithvi, Jal, Akash, Vayu, and Agni. And dosa are composed of the five mahabhutas or but on the other the mahabhuta is predominant. First I take the vata dosa, where is the akash and vayu predominates, and second dosa is the pitta, where is the agni or tejas is predominant mahabhuta, and in kapha dosa the prithvi and jal mahabhuta is predominant. The five Mahabhutas are important in Ayurveda, not Ayurveda, in whole universe construction, five Mahabhutas role. And in Ayurveda, three dosa were dominated by the presence of the dosas, Mahabhutas. And as I said, why why vata is where is the akash in vayu is predominates, and if any dosa aggravates or it diminutes, it affects the balance of the body. So there's humans should be try to maintain the balance between them. The dosas, how to which type of food taken, and all in Ayurveda, the behavior and food habits are very important, and there should be no any aggravation or a diminution of any contents or uh, for the healthy life, and there is need a equal balance. And the Nadi Pariksha, the where is Nadi Pariksha or a pulse examination in Ayurveda is a technique that assess
the physical, mental, and emotional imbalances through analyzing the pulse at specific locations on the radial artery. You know the radial artery means artery that enters the wrist on the side of the thumb, and all three you know very well. Any of the muscular or elastic walls, blood vessels forming the part of the circulations from from heart, oxygenated blood circulates throughout the body. This is all three function, and what is the Nadi Pariksa? It is ancient Ayurvedic method of the diagnosis that goes beyond simply measuring the pulse rate to understand the subtle vibration of the other characteristics. And how it is done, this practice, the practitioner uses the index, middle, and index finger, hands index figure, the index figure, and the middle figure, and the ring figures, to palpate the pulse at the radial artery. It's the radial artery. I already told you. Radial artery means the artery that enter the wrist on the side of the thumb, and you can see in the video where radial artery position, specifically the three locations corresponding to the Bath, Pitta, and Kapha. First is the Vata, is indicating the index figure, and Pitta is the middle, and Kapha, here is the another ring figures that is called Anamika. And the practitioners assess the pulses, strength, rhythm, and speed. Yeah, the speed is very important. The practitioners when palpate the hand, generally the male person's right hand, and female for female user practitioners uses the left hand. And when palpate the artery, there is speeds. The difference in Ayurveda, the birds type of movement, and some birds, this is chakur, yeah, petris type of movement, how it run, and crow type, the pitta, or leech type of movement. The animals, on the basis of the movement of the animals, you can see in my video. The moment you can see the figures, and you will get information, detailed information through the figures and videos. And the practitioner assess the pulse, strength, and rhythm, and speed, and qualify or quality along with the other subtle characteristics. And the experience practitioner uses their experience and skill to interpret the signal obtaining from the pulse, and identify the imbalances. And this is, I'm giving information just for your information about the Nadi examination. But you need the trained or a skilled doctor for this, for the detail. Without it may be dangerous. And so the detailed information you must gather and advise, or you do this practice in the knowledgeable practitioners. And what can it reveals the Nadi examinations, the physical and mental constitution. I already told you, the human body is composed of the five Mahabhutas, and dosas. There are the three dosas, and dhatu and mala, and there should be the equal balance. And if any balance disturbed, if any dhatu, any dosas aggravates, there may be there is
the imbalances and chances of the imbalances. And so, Nadi examinations give information on the physical and mental constitution and current imbalances and disease prognosis, diagnosis के बारे में about the knowledge and tissue health and tendencies of behavior. Depends on the behavior, which type of behavior of the persons. If stage of agony, it will be very aggressive type. And Nadi-pariksa, the importance, it is considered a crucial tool in the Ayurvedic diagnosis and helping the practitioners understand the root cause of the health issues and develop personal treatment plans later. And नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद में बीमारियों का पता लगाने की एक प्रमुख तकनीक है। इसे नाड़ी चिकित्सा या नाड़ी रीडिंग कहते हैं। इसमें मरीज की नाड़ी की गति को, जैसे मैंने बताया, स्पीड और पहले इंग्लिश में बताया कि स्पीड और रिदम, ये सारा इसमें उसका नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिशनर्स को। तो इसमें नाड़ी की गति को माप कर नाड़ी परीक्षा से मतलब बीमारियों का पता लगाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि लीस की तरह से ऐसे कि वो जैसे आपने किसी में जैसे पित्त में कैसे उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसमें मोमेंट हो रहा है, फिर इसी तरह से चुकर एक तरह से पैटिस जो वर्ड होती है वो जैसे धीरे धीरे चलते फिर अचानक से बढ़ जाता है। जैसे बुखार आता है ना किसी को, तो वो बेस जो है पल्पिटेशन से देखता रहता है कि नाड़ी किस तरह से दबाने पे उसमें मोमेंट कैसा आ रहा है, कि एकदम से स्ट्रेट में जा रहा, कि थोड़ा रुक रुक करके उसमें नाड़ी में सर्कुलेशन जो आर्टरी जो है, जो शरीर हृदय से जो रक्त ले आती है शरीर के समस्त भागों में, तो उसमें मोमेंट कैसे हो रहा है। अगर जैसे एक हिंदी में कहते हैं धपक धपक करके, तो उसमें वो कौन सा रोग उसमें एकदम से प्रैक्टिशनर बता देगा कि इसमें इस चीज़ की ज़्यादा मतलब अग्नि की ज़्यादा मतलब अग्नि की वजह से इसमें प्रॉब्लम है, या वायु की वजह से है, और या कफ की मात्रा ज़्यादा है। जैसे बच्चों में ज़्यादा कफ की वजह से रोग होते हैं, और उसके बाद जो वृद्ध लोग हैं उनमें वायु की मात्रा ज़्यादा, उसमें ज़्यादा वो होता है। उम्र के अनुसार भी जो है ये नाड़ी के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ये जो है अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा men should have at least 108 years, and age can be divided in the earlier 10 stages. Diseases during of each stage, जैसे फॉर इंस्टेंस द टिल द एज ऑफ 10, मतलब 10 साल तक की उम्र के बच्चों में जो है कफ क्या होता है, मतलब फर्स्ट जो है कफ एग्रेवेटेड, एंड 10 to 20 एज में द पिता, एंड 30 to 40 एज में जो मतलब 30 से 40 साल से ऊपर जो है वायु जो है एग्रेवेट होता है, मतलब बढ़ता जाता है। तो उसमें उस तरह से डायग्नोसिस करके जो वैद्य होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल, वो एकदम से पता लगा लेते हैं। तो यह जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियों का भी यह जो है सटीक ढंग से निदान कर सकती है ये नाड़ी चिकित्सा। लेकिन इसमें किसी ट्रेंड पर्सन से आपको उसमें जो है परामर्श लेना होगा, और यह रोग का मूल कारण को समझने में भी मदद करती है कि शरीर में कैसे, मतलब उसका शरीर कौन से प्रकृति का है, वायु प्रकृति उसमें ज़्यादा है कि अग्नि प्रकृति उसका किस तरह, उसी तरह से वो दवाई देते हैं। लेकिन आजकल के लोग जो हैं मॉडर्न जो चिकित्सा है हमारी वेस्टर्न से जो कंट्री से आई है, उसमें तो सीधा सिर दर्द को बस आपने हुआ किसी को गोली खा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एकदम उस समय तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। आप कब तक गोली खाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा सिस्टम है कि वो मेन प्रकृति पे कि किस वजह से ये रोग कैसे, कौन सा कहाँ पे बैलेंस आया और इम्बैलेंस हुआ, किस दोष की वजह से मतलब शरीर में जो है आपका बैलेंस बिगड़ा, तो उसके अनुसार वो दवाई का जो है ट्रीटमेंट देते हैं। और वही जो है बहुत ही मतलब शरीर को निरोगी करने के लिए होता है।
और रोगी के शरीर की मानसिक स्थिति का भी इससे पता लगाया जाता है। ये देखो कि अगर जैसे कि कोई आदमी डिस्टर्ब है तो उसमें कैसे उसकी मतलब उसकी जीवन शैली है, उसका शरीर कैसा है, किस तरह से वो कैसे मतलब डिस्टर्ब कंडीशन में है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन जो आजकल के मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में है, इतना डिटेल में नहीं होता है इसमें जितना कि पहले उसमें हमारे ये नाड़ी चिकित्सा है। ये सिर्फ आयुर्वेद में और सिद्धा में इसका नाड़ी चिकित्सा का बहुत सारा शुरू से जो है ज्ञान दिया गया है। और मॉडर्न मेडिसिन में ये डिफरेंट है। आपने देखा डॉक्टरों स्टेथोस्कोप तो लगाते हैं, लेकिन उसमें ये डिफरेंट है, ये उससे हटके इतना उसमें पता नहीं लगता है। वो डॉक्टर जो है बस सिर्फ पल्स रेट देखता है कि जनरली मतलब हेल्थी जो वयस्क पुरुष होगा उसमें 60 से 100 तक पल्सेस होते हैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगले 1 मिनट के बाद जो है पल्स रेट किसी में फिर बढ़ता भी सकता है और घट भी सकता है। तो पल्स रेट ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये नाड़ी चिकित्सा जो है मोमेंट्स पे कि ब्लड में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और अलग अलग जो है वेद जो है जैसे ये कलाई के पास जो हमारी जो मैंने बताया कि प्रकोष्ठिका धमनी होती है, तो उसको दबा करके उसमें देखते हैं और उससे पता लगाया जाता है कि वात, पित्त और कफ